back to my YouTube channel, Grass Chemistry. I am Neha Shirbate. Here we are going to learn about the methods of preparation of alkanes from different compounds. So today we will start from unsaturated hydrocarbons. We can prepare alkane from various compounds. So one of the methods of preparing alkane is from unsaturated hydrocarbon. So unsaturated hydrocarbons are the compounds which consist of carbon as well as hydrogen containing aliphatic type of compounds, means open chain of carbon compounds, as well as they are unsaturated, means consist of double and triple bond, that is multiple bonds. तो मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड से हमें अल्केन्स जो है दैट इज सिंगल बॉन्डेड जो कंपाउंड है वो हमें प्रिपेयर करना है आज. सो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. So here I am giving example first from which we can prepare alkanes, and in this method we are adding hydrogen, hence this reaction is known as hydrogenation. Hydrogenation means addition of hydrogen. Addition of hydrogen is known as hydrogenation, or it is also known as reduction. Addition of hydrogen is also known as reduction. So here reduction reaction takes place, and it takes place in presence of some catalyst like nickel, platinum, palladium at different conditions. If you are using platinum and palladium as a catalyst, then it takes place at room temperature, and if you are taking nickel as a catalyst here, then the reaction takes place at high temperature and high pressure. So let us start the methods of preparation of alkane. So first is from alkene. From alkene. Alkene means double bonded compound. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां पर रहेगा वो कंपाउंड से हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा अल्केन. So from doubly bonded compound we have to prepare single bonded compound. So this reaction takes place like this. I am taking here example of double bonded alkene ethene. दो कार्बन का अल्कीन कौन सा रहेगा? इथीन. So इथीन देखो डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पर ई नहीं आना चाहिए. इथीन को जब हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ. आई एम रिएक्टिंग हियर विथ हाइड्रोजन H2 के साथ में इसे रिएक्ट करोगी, एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड पैलेडियम. आई एम राइटिंग हियर कंडीशन प्लैटिनम और पैलेडियम, एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर. If you are using platinum and palladium, then at room temperature reaction takes place, and if you are using Ni, this or Ni, so that will be at high temperature and pressure. Reaction takes place. Okay. So what product will obtain here? This pi bond gets break. देखो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी? Addition reaction takes place. Addition reaction होगी. Why this is addition type of reaction? Addition reaction takes place as there is unsaturation. Due to unsaturation, which type of reaction takes place? Due to unsaturated compounds or unsaturation, addition reaction will take place here. And as we are adding hydrogen, this reaction is also known as reduction reaction. Reduction means what? Reduction means addition of hydrogen is also known as reduction. So reduction or addition or this reaction is also known as hydrogenation. Hydrogenation means addition of hydrogen. Addition of hydrogen is also known as hydrogenation or reduction, or this type of reaction is known as addition reaction. So in this type of reaction, this pi bond gets break. At the same time, this hydrogen bonds break homolytically. ये bond homolytic fission से break होगा. Why? Because there is equal electronegative value of this and this hydrogen. Hence this bond breaks homolytically. Homolytic bond break होगा. Each hydrogen consists of one single odd electron, and this pi bonds get break. Hence double bond का conversion किसमें होगा? Single bond में. CH2 single bond CH2.
यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये हमने पहले ब्रेक किया, तो डबल बॉन्ड का कन्वर्शन किस में होगा, सिंगल बॉन्ड में, एंड यहाँ पर रहेगा ये फ्री बॉन्ड। ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ इसका हाफ बॉन्ड ये कार्बन के पास है, हाफ बॉन्ड ये कार्बन के पास है, तो वी आर नॉट यूजिंग हाफ बॉन्ड, इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड, इट इज अ फ्री बॉन्ड, ये फ्री बॉन्ड है। तो ये फ्री बॉन्ड है, अब ये हाइड्रोजन के पास फ्री बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन के पास फ्री बॉन्ड है, तो ये दोनों हाइड्रोजन के फ्री बॉन्ड, इसका ये फ्री बॉन्ड यहाँ पर क्या फॉर्म करेंगे, सिंगल बॉन्ड। सो बाय दिस वे वी आर गेटिंग हियर इथेन फ्रॉम इथीन। सो यहाँ पर हमें इथेन ये मिलता है फ्रॉम इथीन। सो दिस रिएक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन एज CH2 double bond CH2 plus H2, so this bond gets break and addition reaction takes place। ये हाइड्रोजन एक कार्बन के पास जाएगा, ये दूसरा हाइड्रोजन जो है ये दूसरे कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा, एंड CH2 डबल बॉन्ड का कन्वर्शन हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, यहाँ पर ऐड हो जाएगा ये एक हाइड्रोजन। तो इसी को हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और C2H6 भी लिख सकते हैं, इसका नेम रहेगा इथेन। सो बाय दिस वे एट हाई टेम्परेचर when you are using Ni, condition must be at high temperature and pressure, and if you are using platinum and palladium as a catalyst, that reaction takes place at room temperature. So this is about the preparation of alkane, that is ethane, from ethene, that is unsaturated compound. Here we are taking one more example of preparation of alkane from double bonded compound. So I am taking here example of propene. Propene means CH3 CH double bond CH2. This is propene. डबल बॉन्ड है इसलिए ENE आया है, यहाँ पर 3 कार्बन का है इसलिए प्रोपीन। प्रोपीन को जब हम रिएक्ट करेंगे H2 के साथ जब हम इसे रिएक्ट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ सेम कंडीशन लिखना है आपको, प्लेटिनम और पैलेडियम at room temperature or Ni at high temperature and pressure. So क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड का कन्वर्शन होगा सिंगल बॉन्ड में, तो मुझे क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड gets converted into single bond and this one hydrogen will add on। देखो ये H2 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन जाएगा ये एक कार्बन के पास, दूसरा हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा दूसरे कार्बन के फ्री बॉन्ड पे, तो ये दोनों फ्री बॉन्ड पे ये एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, एंड यहाँ हमें कौन सा कंपाउंड मिल रहा है, यू कैन ऑल्सो राइट दिस कंपाउंड लाइक दिस, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, so this is propane। So here we are getting propane from propene। So by this way we can prepare different alkanes from alkenes। Next, from alkynes we have to prepare alkane। Alkynes means triply bonded compound। Carbon-carbon triply bonded compound is known as alkynes। So alkynes are unsaturated hydrocarbons, as there is multiple bond, that is triple bond. Hence I am taking here example of acetylene, CH triple bond CH. It is also known as acetylene or ethyne। So when ethyne undergo reduction reaction, reduction means addition of hydrogen. Here this reaction takes place in single step or in multiple steps. So I am taking here 2 molecules of H2. First this bond gets break, at the same time these 2 pi bonds get break, and condition will be same. Reaction takes place in presence of platinum or palladium at room temperature or in presence of Ni at high temperature and pressure। So triple bond gets converted into single bond, and each carbon consists of 2 free bonds on which this hydrogen atom
will attach. So by this way, you are getting product ethane from ethyne. You can also write this structure like this: CH3 single bond CH3 or C2H6. So these are all the methods of preparation of alkanes from unsaturated hydrocarbons like alkenes and alkynes. You can also carry out this reaction in 2 steps also. First, you have to react only one hydrogen molecule with this acetylene or ethine. Okay, so one pi bond will break and this hydrogen will attach on these 2 carbon atoms. So here I am getting product CH double bond, ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन हो जाएगा डबल बॉन्ड में, and this free bond attached with this hydrogen free bond and forming here CH bond. That is here CH2 double bond CH2, that is ethene is formed from ethyne first, and then this ethyne CH double bond CH again reacts with another H2 molecule, another hydrogen molecule, in presence of same condition. This pi bond gets back, ये हाइड्रोजन एक कार्बन के पास जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास. So here CH double bond gets converted into single bond. ये पहले के है 2 हाइड्रोजन है, एंड अभी जो हमने ऐड किए, जो मैंने रेड कलर से शो किए हैं, ये हाइड्रोजन है, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज इथेन आपको यहाँ पर मिलेगा एज अ प्रोडक्ट. So by this way we can prepare different alkanes from alkenes and alkynes at the same condition, like platinum in presence of catalyst, platinum and palladium or nickel. In this case, just you have to remember that during reduction, that means addition of hydrogen, generally nickel catalyst is used, but ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक रिएक्शन में Ni ही यूज होगा. आप प्लैटिनम, पैलेडियम ये भी यूज कर सकते हैं. कैटलिस्ट का वर्क क्या होता है? कैटलिस्ट यानी एक ऐसा सब्सटेंस होता है, इट ओनली इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बट डज नॉट डिपेंड और डज नॉट रिएक्ट विद द रिएक्टेंट. किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट नहीं होता है, इट जस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है. ये इसका काम होता है कैटलिस्ट का. सो दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ alkanes from unsaturated hydrocarbons, that is alkenes and alkynes. Thank you.